into quantum mechanics. So this is very interesting. So just try to understand the each and every point, because these are very simple points. Most of people know this thing, but you have to apply all these points when it will come to the point of view of quantum mechanics. So for example, suppose we define any constant vector into three-dimensional space. How we will define it, and what is meaning of each and every part of this vector. So before defining to any vector, we have to put the axis, and once we are putting the axis, then we have to just go for three orthogonal axes. If I am talking about orthogonal, that means you can assume that scalar product of this to this is going to 0. That scalar product of this and this is going to 0. In very crude sense, you can say these are perpendicular. Okay. And obviously we have to define the origin. Unless until you are not going to define origin, you cannot define the length. So first we have to define origin, and then we can define any vector A. And let's say these are my direction I, J, K. So what is meaning of I, J and K? These are unit vector along x-axis. These are unit vector along y-axis. This is unit vector along z-axis. So we have three particular axes, and we have defined our unit vector with the notation I, J, K. And if we are just trying to define a vector into this space, what I am trying to say? I am just going to define vector into this space. Then this vector A can be defined by some constant A1, A2, A3, and this A1, A2, A3 are nothing but the scalar number. So how you can write the vector A? You can write vector A as A1 I cap plus A2 J cap plus A3 K cap. Everybody is comfortable up to this? This is just a +2 level concept, but you will see this +2 level concept is so important that it can be extended up to some complex notation also. Now, what is IJK? IJK is the unit vector which will represent this all three-dimensional space. Can I represent this unit vector I as a matrix? लिख सकते क्या? ऐसा लिख सकते हैं ना? And similarly, we can write this unit vector J also as a matrix. And similarly, I can write unit vector K also as a column matrix, or you can write it as a row matrix also, same type of thing. Everyone is comfortable up to this? Yes. Now, suppose I want to write another vector into the same space. So is that I, J, K is going to change, or just a scalar number is going to change? Scalar number is going to Scalar number Only a is scalar number is going to change. So if I just want to write another vector B into the space, and this space is created by in a basis which is written by I, J, K, then B can be written, let's say this is B1 I cap, B2 J cap plus B3 K cap. Everyone is comfortable? Yes, sir. Yes. Similarly, you can, how many vectors you can write into this space?
Infinite. Infinite number of vectors you can write into this space. Okay, and this thing is very easy, very simple. Why? Because we can visualize the three-dimensional system very easily, and we can use it in a daily life. And what will be this vector? What will be this vector? Null vector. Null vector. Very good. What is the definition of that vector? 0, We 0, define the 0. origin. Isn't it? A vector which is present in the origin. That is zero vector, है ना? So you can define this vector as 0, 0, 0. Now, let us try to go for another vector. Let's say this is your C vector. This is different vector. How you will write? Is that I, J, K is going to change? No. No, No, sir. No, sir. because we are defining all vector into this particular space. So if I, J, K is not going to change, this will be C1 I cap, C2 J cap plus C3 K cap. Now, similarly, we can write infinite number of vectors. Infinite number of vectors. Now, these vector will fulfill some basic quality, some basic property. So first property is nothing but the vector addition. What is meaning of that? Meaning of that, if I have vector A which belongs to this particular space, which is very popularly known as Euclidean space. क्या कहते हैं इसे? कौन सा स्पेस कहते हैं? Euclidean space. जो I, J, K जो स्पेस है जो आप डेली लाइफ में वर्कआउट करते हो, that space is very famously known as Euclidean space. This is just a name. Okay. Now this A can be written as, sorry, this A, suppose A is a vector in a Euclidean space, then B is a vector in a same Euclidean space, then A plus B will also a vector. Yes. Everyone is agreed? Yes, sir. Yes. And so if A is a vector in this particular Euclidean space, B is the vector in this particular Euclidean space, then C can be also a vector which will be also part of this particular Euclidean space. Yes? And this relation is identified as what? Closure relation. इस relation को क्या कहते हैं? Closure relation. Why closure relation? Because A and B and C all belongs to same closure set of this particular Euclidean space. Very simple. Now, can you give some physical quantities? कुछ physical quantity के बारे में बात कर सकते हो जो ऐसी property follow करता है? बताओ. Set of natural number. Sorry? Set of natural number. Mass plus mass. No, I am equal just to talking mass. about some vector, some physical quantities. Okay, Mass. natural number are not physical quantities. Okay, these are just steps. हाँ बताओ. Mass. No. You have wave plus wave will give you some wave. Principle of superposition, isn't it? Yes. पढ़ा है ना? Wave plus wave is equal to wave. Now, electric field plus electric field, what you will give? What you will Yeah. get? Electric field. Okay, so you can have vector plus vector is equal to vector, wave plus wave is equal to wave. Some wave you can have, some displacement, you can done this thing into interference, you have done this thing into diffraction, everywhere you have done this thing. Electric field plus electric field plus electric field is equal to some electric field. So this is some sort of closure relation. And this is nothing but one kind of principle of superposition. So if we are using this type of mathematics, somehow we are using
we are trying to use principle of superposition. Okay, these things are very important. These things are very important. You have to just right now accept all these things. When we will work a real quantum mechanical system, you will find that will create a miracle. Now, can I write A plus B is equal to B plus A? लिख सकते क्या? लिख सकते हैं. Yes. Why? Because vector will always follow commutation relation. And this is nothing the rule of vector addition. Similarly, you can go for A plus B. You can add A plus B, then you can add it to C. Then you will go for A plus B plus C. This will be associative. We all know all this structure. Now, how you will define the origin? What is the meaning of origin? Reference point. Reference point, very good. But mathematically, how you will define the origin? If you will move the A distance and again you will come back in opposite direction with the same distance, then you will land at where? Origin? 0 vector. Yes, sir. Yes. That means, can I say there must be some origin vector where I can find with this particular operation and which will be null vector, isn't it? Yes. In another word, and this is nothing, and this can be also written as A vector plus 0 vector will give you the same A vector. So there must be existence of null vector. Null vector. Okay. Okay. Null vector, अभी जैसे किसी ने कहा था कि just it's a reference point, isn't it? Yes. है ना, this is just a reference point, जिसके reference में हम चीजों को देख पाता है. We are just assuming my reference is 0 and then we can see all this particular structure. Are you people happy right now? Yes, sir. Okay. Now, what you will do if you want to change the length of this vector? We have to multiply some constant with it. Some constant, okay, and that constant must be some scalar number. Yes. Yes. So now we should also follow some basic property of scalar multiplication. I am not talking about a scalar product. What I am talking about is scalar multiplication. Now look at here. So if I am talking about a scalar multiplication, then so let's go for scalar multiplication. If I have some scalar number A, if I am writing anything with the small Roman letter, that means we are writing it as a scalar number. So here is some scalar number A, another scalar number B. If I am going to multiply with A, what you will get? Can I write this thing as AA plus BA? लिख सकते ना? Yes. Yes. Now, suppose I have some scalar number A and we are going to multiply with A plus B. What you will get? A plus AB. You can multiply AB to A. That will exactly same as BA to A. Yes or no? Yes, sir. Either you will first multiply with B, you will get some new vector, that's a parallel one. But again, you will multiply with A. That is the same thing that you are multiplying A first and B after that. Yes? If Yes. you are going to multiply 0 to any vector, what you will get? 0. Null.
null vector, isn't it? You will get the fundamental vector, you will get null vector. Okay, these things are very trivial, very obvious. तो आपको लग रहा है कि सर ऐसा क्यों पढ़ा रहे हैं यार, ये सब तो बहुत ही सिंपल चीजें हैं, ये सब तो सबको पता है। ऑब्वियसली ये सारी चीजें सबको पता है, बट हमें इस थ्योरी को एक्सटेंड करना है एक न्यू वर्ल्ड बनाने के लिए। ओके, चलो अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, एंड नाउ ट्राई टू गिव मी व्हाट इज A1। जरा मुझे डिफाइन कर सकते हो व्हाट इज A1? A1 क्या है? The component of vector in x direction. Very good. So you are just saying component of vector A in x direction, isn't it? Yes. Or you can say the component of vector in I cap direction, or you can say the projection of vector in I cap direction. Am I right? Yes, sir. है ना? This is nothing but the projection of vector in I cap direction. So if you are talking about projection of vector, you have to talk about the scalar product. Yes, sir. सोच कर बताओ, हाँ या ना? अगर आप प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर के बारे में बात कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट सम स्केलर प्रोडक्ट। Unless until you are not talking about a scalar product, you cannot talk about the projection. You can talk about the component. Am I correct or wrong? सोच करके देखिए। Correct. करेक्ट है? Yes, sir. This is very trivial, very simple, but it's a very, very conceptual thing. So now, if I am talking about scalar product, यहां पर लिखे, यहां दिखाई दे रहा है क्या आपको? Let me come into this side. So here is, I am talking about scalar product. If I am talking about A dot B, what is meaning of that? बताओ इसका मतलब क्या है? A dot B अगर मैं ऐसा लिखता हूं तो आपके दिमाग में क्या आता है? AB cos theta. नहीं, इसका मतलब क्या है? ये नोटेशन का मतलब क्या है? मैंने कहा ना आज हम लोग नोटेशन सीख रहे हैं। बेसिकली दिस इज नथिंग बट द नोटेशन ऑफ, समझने की कोशिश करो, नोटेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट in Euclidean space, isn't it? Yes या नो? जहां पर आप वेक्टर को एक लाइन के थ्रू दिखाते हो, वहां पर आप A डॉट B जो लिख रहे हो, दिस इज वन काइंड ऑफ नोटेशन। दिस इज नोटेशन। सोचने की कोशिश करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज दिस? दिस इज वन काइंड ऑफ नोटेशन। तो ये अगर एक तरह का नोटेशन है, दिस इज स्केलर प्रोडक्ट, व्हाट इज वैल्यू ऑफ दिस स्केलर प्रोडक्ट? इस स्केलर प्रोडक्ट का वैल्यू क्या होगा? A1 स्केलर B1 प्रोडक्ट इज अ नंबर और वेक्टर number. नंबर। कैसा नंबर है? स्केलर नंबर है। Yes. Yes, sir. यस, सो दिस विल बी समथिंग लाइक, ये जो वैल्यू होगा वो मॉड A mod B and the cos between A and B. If I have a vector something like this, suppose this is my A vector and this is my B vector, this will be angle between A and B, then we can write A dot B is something like AB cos theta. ठीक है? Yes. Yes, sir. Now we have to define what is your norm, what is mod A. ये डिफाइन करना पड़ेगा ना? इसे क्या कहते हैं? Modulus of Magnitude of A. मॉडुलस मैग्नीट्यूड। अब आप इसका नया नाम रखो, नॉर्म्स। क्या कहेंगे इसे? Norms. नॉर्म्स। मैग्नीट्यूड, मॉडुलस या नॉर्म्स। सो नॉर्म्स ऑफ अ वेक्टर इज ऑलवेज पॉजिटिव और नेगेटिव, और इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव।
Always positive. That will be always positive. Very good. So now यहां तक देख लो, यहां तक सारे लोगों ने नोट कर लिया ना? आप चाहो तो जस्ट स्क्रीनशॉट ले लो, आपका काम हो जाएगा. Isn't it? मैं हट जाता हूं. चलो, let's try to go for a next concept where we will talk about norms of a vector. सर मुझे जो आपने कहा था A डॉट बी एज ए नोटेशन, वो चीज थोड़ा एक्सप्लेन कर दो. जैसे समझने की कोशिश करो. A प्लस बी, ये क्या है? बताओ. We will get a new vector whose length is नहीं, A प्लस बी क्या है? एक तरह का नोटेशन ही तो है. ये Notation प्लस है, साइन yeah. किस चीज के बारे में बात करता है? Okay. नोटेशन ही तो बताता है. Yeah. और चूंकि आपको बचपन से ये चीज बताया गया है कि प्लस का मतलब एडिशन होता है, देन यू कैन यूज इट ट्रिवियली. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes, sir, yes. तो जैसे ही मैं लिखूंगा 2 + 2, तो आप क्या बोल दोगे? 4 बोल दोगे, है ना? Yes. तो 2 + 2 is what? 2 + 2 is one kind of notation of adding one number to the another number. ठीक है? उसी तरह से मैं अगर कहूं A डॉट बी, तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? बताइए. A डॉट बी क्या क्या मतलब दिमाग में क्या आ रहा है? Like dot product जैसे A1 You have to find the scalar product. Scalar Yes, product, जिसे yes. आप डॉट प्रोडक्ट कहते हो. Yes, ठीक. yes. अब डॉट प्रोडक्ट नहीं कहेंगे, अब उसे क्या कहेंगे? स्केलर product. प्रोडक्ट. ठीक है? Why स्केलर प्रोडक्ट? बिकॉज आउटकम इज ए स्केलर नंबर. Okay. ठीक है? एग्रीड? अब ये अगर मैं ये नोटेशन लिखता हूं, तो इस नोटेशन का मतलब क्या है? If I am writing this notation, then this notation means modulus of A into modulus of B and angle between cos of angle between A and B. तो एक्चुअल वैल्यू तो ये है ना? आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? Yes, sir. और ये वैल्यू क्या है? स्केलर नंबर है या वेक्टर है या फंक्शन है? क्या है ये? Scalar number. स्केलर नंबर. And this is notation of scalar product and this is value of scalar product. Are you getting my point? Yes, sir. ठीक है ना? अरे जिस तरह से A डिवाइडेड बाई B, इसका मतलब क्या है? डिवीजन करना. A इंटू B, मल्टीप्लीकेशन करना. उसी तरह से A वेक्टर डॉट B वेक्टर इज वन काइंड ऑफ नोटेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट. कहां पर? इन यूक्लिडियन स्पेस. अलग स्पेस होगा तो उसका डेफिनेशन अलग बना सकते हैं. ठीक है? Okay, sir. ओके. चलो. So now let's try to go for a norms of a vector. So what we have, suppose I have a vector dot a vector, what you will get? क्या होगा बताओ? A square. mod a square होगा, है ना? Yes. है ना? And can I write and this, so what will be mod a vector? Root under A A square plus. a dot a, है ना? Yes. Yes या no? Yes, sir. Yes. So this quantity must be always a positive quantity. So norms of vector
A is defined as root under scalar product of A to scalar product of A. Yes. And how you will get the unit vector? क्या किसी भी वेक्टर को यूनिट वेक्टर में हम कन्वर्ट कर सकते हैं? Yes. यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है ये बताइए? What is Magnitude meaning 1. of unit vector? Huh? Magnitude 1. Magnitude is 1. So any vector, very important point, any vector can be transformed to unit vector by dividing its norms. Yes या no? सही लिख रहा हूं ना? So Yes. किसी भी यूनिट वेक्टर को आप दिखा सकते हैं. If this is unit vector, then you can write a vector by root under scalar product of a dot a. लिख सकते हैं ये? Yes, sir. Yes. So this is your unit vector, and this vector is normalized vector. इसे क्या कहते हैं? Normalized vector. क्लियर है ये? अब यूनिट Yes. वेक्टर का फायदा क्या है? आप जस्ट उसके मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट द एग्जैक्ट वेक्टर. एंड यूनिट वेक्टर, बताओ यूनिट वेक्टर का एक एग्जांपल दो, क्या क्या है? IJK इज वन फंडामेंटल यूनिट वेक्टर, है ना? Yes. यस या नो? Yes, sir. I cap, J cap, K cap is one particular unit vector, isn't it? Now, अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ऑर्थोगोनल वेक्टर. ऑर्थोगोनल वेक्टर इन सम सेंस, अगर आप यूक्लिडियन स्पेस में लाइन के थ्रू वेक्टर को दिखाते हो, यूक्लिडियन स्पेस में हम वेक्टर को कैसे दिखाते हैं? एक लाइन के थ्रू, है Line. ना, जिसमें कि एक एरो से शो करता है. यस, जो इन जनरल अभी तक हम वेक्टर को दिखा सकते हैं. नाउ, so if two vector are orthogonal or two vector are perpendicular, how you will check the perpendicularity? Dot product is equal Dot to to dot. 0. Dot product क्या आएगा? 0. Yes. So if you have one vector A, another vector B, and whose dot product is 0, then A and B is said to be orthogonal vector. Is said to be what? Orthogonal vector. ठीक है. अब देखो क्या मजेदार बात है. The thing is that, and this is the whole idea of quantum mechanics. If I want to write a vector, and this a vector is a1 I cap plus a2 j cap plus a3 k cap. Are you getting my point? Then what is a1? Can I write a1 is equal to I dot a vector? लिख सकते क्या? Why? Yes. Why I am saying I dot a vector? Why? Because I know I dot I is equal to 1. I dot j is equal to 0. 0. I dot k is equal to 0. 0. लिख सकते ना? ये है, इसी कारण ऐसा लिख सकते हो, isn't it? Yes, sir. If it is not true, you cannot write this particular thing, isn't it?
Yes. Now, so similarly, I can write my A vector as I dot A I cap plus J dot A. You can see it's a very interesting. J dot A J cap K dot A K cap. लिख सकते हैं ना? Yes. Yes, sir. लिख सकते हैं? Now you can see this thing will be true because we can write something like this, because I, J, K are ortho normal vector. What is meaning of orthonormal? Its magnitude is 1. This is normal. And they are orthogonal. Why? Because the scalar product between 1 and second is 0. Yes? Yes, sir. Everyone is comfortable? सोच लो, देख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. इसी पर पूरी की पूरी क्वांटम मैकेनिक्स में हम लोग प्ले करेंगे. And also you have some another inequalities. Triangle inequality क्या होता है? Mod A plus mod B must be greater than mod A plus B. होता है ना? This is something like triangle inequalities. Always. Yes, sir. So ये सारी प्रॉपर्टी हमारे वेक्टर को फॉलो करनी चाहिए. चलो, अब मैं तुम लोगों से एक बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन रेज करता हूं. आई एम जस्ट गोइंग टू रेज अ वेरी फंडामेंटल क्वेश्चन. एंड व्हाट इज दिस फंडामेंटल क्वेश्चन? यहां तो 3 डायरेक्शन थे, तो आपको आई जे के से काम चल गया. ठीक है ना? नाउ इफ आई वांट टू राइट अ वेक्टर which has n number of direction and all direction must be behave something like I, J, K. समझ रहे हो हमारा चैलेंज क्या है? Yes, sir. sir. हमें एक ऐसा दुनिया बनाना है. We have to make a new world where not only 3 directions are possible, rather how many directions are possible? And N number of directions are possible, and all direction can be behave like what? I, J, K. क्लियर है यहां तक? चैलेंज क्या है? सिर्फ आई जे के हमारा काम नहीं आ पा रहा है, इससे हमारा काम नहीं हो रहा है. तो हम एक ऐसा वर्ल्ड बनाना चाहते हैं जिसमें हम n नंबर ऑफ डायरेक्शंस क्रिएट कर सकें. तो n नंबर ऑफ डायरेक्शंस को नोटेशन के थ्रू हमें दिखाना पड़ेगा वो क्या है, नहीं है. एंड देन वी हैव टू जस्ट ट्राई टू make a new world of vector, and that vector can be part of Hilbert space. समझ रहे हो मैं क्या बात कह रहा हूं? yes, sir. मल्टी डायमेंशनल स्पेस. मल्टी डायमेंशनल मतलब वन. देखो, समझने की कोशिश करो. मैं अभी आपसे बात करता हूं. रियलिटी में तो सिस्टम का क्या हो सकता है? इधर 1 डायमेंशन होगा, या तो 2 डायमेंशन, या तो 3 डायमेंशन. है ना? यस या नो? यस सर. Yes. Reality, either you have 1 dimension moving on a line, either moving on a plane, or either moving in a space. So realistic system तो हमेशा either 1 dimension होगा, 2 dimension होगा, 3 dimension होगा. यही तो होगा. यस सर. Now, so but mathematically every 1 dimension can have more directions
मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। जिस तरह से आप तो 3 डायमेंशनल पर्सन हो ना, ठीक है, यस सर। बट एक साथ आप क्या सिर्फ एक ही चीज सोच सकते हो? नहीं सर। जस्ट एब्स्ट्रैक्ट थिंग, यू कैन हैव n नंबर ऑफ थिंग ना, यस सर। और वो जो n नंबर ऑफ थिंग भी तो आप ही के पार्ट हैं, भले वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। यस सर। हाँ या ना? यस सर। जैसे कि मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, देखो, जस्ट प्ले की तरह समझने की कोशिश करो। हम लोग मैथमेटिक्स में आएंगे, बट आप कुछ ऐसे समझने की कोशिश करो। इसको मिटा दूं? ये सब तो क्लियर है ना? बिल्कुल आसान Yes, चीज है। sir. ठीक है। सपोज करो मैं एक पर्सन का एग्जांपल ले रहा हूं, है ना? एक पर्सन है, ठीक है। ये पर्सन नॉर्मल भी रह सकता है कि नहीं? यस सर। यस। द सेम पर्सन कैन बी हैप्पी ऑल्सो, यस सर। हो सकता है या नहीं? Yes, sir. यस। सेम पर्सन कैन बी सैड ऑल्सो, यस सर। सेम पर्सन कैन बी सरप्राइज्ड ऑल्सो, हो सकता ना? Yes, sir. यस। एंड सेम पर्सन, और कैसा इमोजी बना सकते हैं, कैन बी वेरी क्रूएल ऑल्सो, यस या नो? बहुत गुस्सा में भी हो सकता है। Yes, sir. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? देन कैन आई से, सपोज इस पर्सन के ये 5 ही पॉसिबल मूड्स हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नाउ इफ these are different moods of this particular person, so अगर मैं इस पर्सन के बारे में बात कर रहा हूं, तो क्या मैं इंडिपेंडेंटली इस मूड के बारे में बात कर सकता हूं? इंडिपेंडेंटली इस मूड के बारे में, इंडिपेंडेंटली इस मूड के बारे में, इंडिपेंडेंटली इस मूड के बारे में, इंडिपेंडेंटली इस मूड के बारे में बात कर सकते हैं या नहीं? हाँ या ना? Yes, sir. कर सकते हैं ना? अब ये बताओ, अगर ये नॉर्मल पर्सन है, तो जिस समय ये खुश होगा उस समय गुस्सा तो नहीं होगा ना? नहीं. यस सर। यस या नो? सो एक समय तो पर्सन का एक ही मूड होगा। यस सर। यस? Yes. चलो, अब मैं इसी चीज को, अब ये तो सर। मैंने पिक्चर के थ्रू दिखा दिया, ठीक है। Sir, अब इसी please चीज speak को in कैन आई, लुक एट हियर, कैन आई से देयर इज अ वन स्टेट, एक पर्सन है, उस पर्सन को मैं एक स्टेट से दिखा सकता हूं ना? Yes, sir. यस। एंड कैन आई राइट सम मैथमेटिकल इक्वेशन अबाउट दिस स्टेट? आप ऐसा करो, इस पर्सन के लिए एक मैथमेटिकल इक्वेशन लिख सकते हैं, इसके लिए एक मैथमेटिकल एक फंक्शन यूज कर सकते हैं या नहीं? इसके लिए भी हम एक फंक्शन यूज कर सकते हैं। सपोज दिस फंक्शन इज f1, दिस फंक्शन इज f2, दिस फंक्शन इज f3, दिस फंक्शन इज f4, दिस फंक्शन इज f5। 5 डिफरेंट फंक्शन यूज कर सकते हैं या नहीं?
आप यूज Yes, sir. करते हो, जैसे मैं आपको बताता हूं। आपने हाइड्रोजन एटम के बारे में देखा है, पढ़ा Yes, होगा sir. हाइड्रोजन एटम लिटिल बिट, Yes. है ना? Hmm. उस हाइड्रोजन एटम में आपने पढ़ा ना, एस सेल कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। यस, Yes. यस। एंड पी सेल कैसा होता है, डंबल की तरह होता है। Yes. पढ़ा है? यस या नो? Yes, sir. सर यस। उसी तरह से और भी आपने पढ़ा होगा, डी सेल कैसा होता है, Double समथिंग bond. लाइक दिस। आर सर गेटिंग माई कैन यू पॉइंट प्लीज और से नॉट? इन इंग्लिश फुल्ली? एस पी डी एफ ये सारे पढ़ा है ना? Yes, sir. Agreed not? So these you can represent different moods of hydrogen atom with different pictorial diagram, और उस पिक्टोरियल डायग्राम को आप एक मैथमेटिकल इक्वेशन के साथ भी दिखा सकते हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और मैथमेटिकल फंक्शन के साथ भी दिखा सकते हो। तो दिस इज द रियल चैलेंज कि कौन से वो मैथमेटिकल फंक्शन होंगे जिसे हम लें। दुनिया में तो बहुत सारे मैथमेटिकल फंक्शन है। यस या नो? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes, sir. समझने की कोशिश करो। हाँ, कोई भी एक सिस्टम है, कोई एक सिस्टम का नाम लो। हार्मोनिक ऑसिलेटर। Harmonic. हार्मोनिक ऑसिलेटर, वेरी गुड। हार्मोनिक ऑसिलेटर एक सिस्टम है, इट्स ओके। इन वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर दैट कैन गो ओनली इन ट्रू एंड फ्रो मोशन इन वन डायमेंशन। यस, यस सर। यस। sir. नाउ उस हार्मोनिक ऑसिलेटर के कई पॉसिबल क्वांटम मैकेनिकल मूड्स हो सकते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes, sir. और No, वो sir. जो पर्टिकुलर मूड्स होंगे, हमें उसके बारे में ही बात करना है, जो हमें दिखाई नहीं देंगे, बट दैट विल वर्क, दैट कैन बी मैथमेटिकली वर्कड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एंड दैट इज बेसिकली डिफाइंड बाय व्हाट? हिल्बर्ट स्पेस। ठीक है, यस सर। चलो देखते हैं क्या है, उसे समझते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को थोड़ा बेटर करते हैं। मैं इसको, इस एग्जांपल को पूरे मैथमेटिक्स में कन्वर्ट कर दूंगा, डोंट वरी। आप इसको याद, इतना तो आप कर सकते हो ना? Sir, can we say that Hilbert space is part of Euclidean space? Can we say this? Hilbert space is not a part of, listen, your system is part of Euclidean space and Hilbert, देखो तुम्हारे पास क्या है वो तुम समझने की कोशिश करो। ये आपका सिस्टम है, ठीक है, हार्मोनिक ऑसिलेटर। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग? This is your mass and this is your spring. Spring mass system is your harmonic oscillator. अब हार्मोनिक ऑसिलेटर से एसोसिएट कई मैथमेटिकल स्पेस हैं, जिसमें एक स्पेस क्या है? यूक्लिडियन स्पेस भी है। उसी तरह से दूसरा स्पेस जो इसके साथ एसोसिएटेड है वो क्या है? दैट इज बेसिकली हिल्बर्ट स्पेस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes, sir. समझ रहे हो? And mathematically, Euclidean space is also one kind of Hilbert space. Are you getting my point? बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जाते हैं, चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। आपने स्ट्रिंग तो देखा है ना, स्ट्रिंग? Yes, sir. यस, ये स्ट्रिंग होता है ना, यू कैन जस्ट, हियर इज a string and they are attached to rigid wall. आप स्ट्रिंग को क्या करते हो? डिस्टर्ब करते हो, देन इट कैन मेक अ एनी पॉसिबल शेप। Yes, sir. कोई भी एक शेप बन सकता है, यस या नो? Yes, sir.
यस, सपोज एक शेप बन गया कुछ ऐसा, ऐसा शेप बन सकता है, यस या नो? बट दिस शेप इज बेसिकली linear combination of fundamental mode, first overtone, second overtone, पढ़े हो ना, फर्स्ट ओवरटोन, सेकेंड ओवरटोन एंड सिमिलरली थर्ड ओवरटोन एंड सो ऑन, Yes, sir. यस या नो? Yes, sir. तो ये जो शेप है ये तो आपको एक्चुअल में दिखाई दे रहा है, लेकिन ये शेप क्या है? सिर्फ ये शेप थोड़ी है, दिस इज बेसिकली डिफरेंट टाइप ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ दिस एंड ऑल अदर थिंग। जिस तरह से आपको, अगर मैं कोई वेक्टर ले रहा हूं, आई एम जस्ट टेकिंग वेक्टर, दिस इज 3i 4j प्लस 5k, ये वेक्टर जो आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, ये वेक्टर क्या है? ये वेक्टर 3 टाइम, सपोज मैं 2 डायमेंशन में ही दिखाता हूं तो आपको ज्यादा बेटर होगा, 3 टाइम आई डायरेक्शन में एंड 4 टाइम जे डायरेक्शन में गया हुआ है ना? एंड आपको दिखाई क्या दे रहा है? यू हैव जस्ट सीइंग दिस थिंग, बट एक्चुअल थिंग क्या है? एक्चुअल थिंग है दैट यू हैव दिस वेक्टर एंड यू हैव दिस वेक्टर, इन दोनों के सुपरपोजिशन से ये वेक्टर है ना? Yes, sir. What is fundamental here? Fundamental is 3 टाइम i and 4 टाइम j, और जो आपको क्या दिखाई दे रहा है? जो आपको दिखाई दे रहा है 3i प्लस 4k, जो कि बेसिकली कुछ एंगल बना करके आपके सामने नजर आ रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes, sir. सो उसी तरह से आपको दिखाई क्या दे रहा है? यू आर जस्ट विजुअलाइजिंग दिस वन, बट ये कैसे बना हुआ है बताइए? Superposition of so many modes. सुपरपोजिशन ऑफ डिफरेंट मोड्स, इजंट इट? Yes. Different modes, fundamental modes, first overtone, second overtone, third overtone, and so on. यही है ना? Yes, sir. नाउ मैं इसे एक वेक्टर लिख सकता हूं, तो इसे मान लो इसका नंबर C1 है, इसके साथ कुछ C2 है, इसके साथ कुछ C3, तो ये जो फंडामेंटल्स हैं इसे i j k की तरह यूज कर सकते हैं या नहीं? Yes. Yes, sir. और C1 C2 C3 को 3 4 5 की तरह यूज कर सकते हैं या नहीं? Yes, sir. एग्जैक्टली सेम थिंग वी आर गोइंग टू डू हियर। समझ रहे हो ये बात? यस सर। आपको So please दिखाई तो ये explain आदमी the दे way- रहा है ना, बट ये आदमी है क्या फंडामेंटली? दिस पर्सन इज सुपरपोजिशन ऑफ दिस मूड, दिस मूड, दिस मूड, दिस मूड और दिस मूड, यस या नो? Yes. Yes, तो sir. हमें कुछ इस तरह, अब यहां पर देखो, यहां पर कितने पॉसिबल डायरेक्शंस मिल रहे हैं आपको, जरा देखो तो। और भी तो होगा, दिस इज योर सेकेंड ओवरटोन, देन यू कैन गो फॉर थर्ड ओवरटोन, fourth overtone. So how many overtones you can get? N number. N number of overtone you can get, and theoretically you can go up to infinite number of directions. So इस शेप को दिखाने के लिए फंडामेंटली हमें कितने पॉसिबल डायरेक्शंस की जरूरत मिल रही है? N number. इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायरेक्शंस की जरूरत मिल रही है। आर यू Yes. गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। सो ये सब तो हम बातचीत के थ्रू दिखा रहे हैं, है ना? हाउ मैथमेटिक्स विल वर्क हियर, मैथमेटिक्स के थ्रू ये सब कैसे करेंगे, ये हमारा रियल चैलेंज है। अगर कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछो। A vector is a combination of many infinite vectors. We can say. एक ऐसा वेक्टर बनाना है जो कि जिसके कितने डायरेक्शन पॉसिबल हो? इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायरेक्शंस पॉसिबल हो। यस? Yes, yes. Are you getting my? You are thinking absolutely correct. You have to create one vector where, and that vector can be
made by or can be made by the superposition of infinite number of unit vector. Are you getting my point? Yes, yes. Everyone, especially jam people, are you people happy? मैं जो कह रहा हूं, Yes, sir. Yes, sir. Sir. है ना? Yes, sir. सो अब सोचने की कोशिश करो क्या करना होगा, कैसे करना होगा. फिजिकली इज दैट पॉसिबल? No. No, physically it is not possible. But mathematically is that possible? Yes, mathematically it is possible. लेकिन अगर वो पॉसिबल है तो उसकी हर एक प्रॉपर्टी कैसी होनी चाहिए? जैसे एक कॉमन वेक्टर की प्रॉपर्टी होती है. Yes, sir. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. So we have to, and that vector will actually belongs to what? Hilbert space. जो लाइन वाली वेक्टर है जिसे आप देख रहे हो, दैट बिलोंग्स टू एक्चुअली यूक्लिडियन स्पेस. बट न्यू वेक्टर जो बनेगा, उस वेक्टर को हम कहां पर देखेंगे? दे बिलोंग्स टू व्हाट? हिल्बर्ट स्पेस. क्लियर है ये? यस. Yes, sir. सो लेट्स ट्राई टू अ लिटिल बिट ऑफ हिल्बर्ट स्पेस और उसमें क्या क्या होना चाहिए. अब बताओ वेक्टर के लिए क्या क्या चीज जरूरी है? डायरेक्शन एंड नंबर. And यस, sir. यस या नो? जैसे यहां पर यूक्लिडियन स्पेस, 3 डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस, इन दिस पर्टिकुलर 3 डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस, हाउ मेनी डायरेक्शंस आर देयर? 3 directions in the Three. Euclid. 3 directions. And how many number you can use? Infinite. Finite. Infinite number of numbers. Okay, so if I want to make a vector where we have infinite number of directions, Sir. Is there a problem from my side or Sir. No, the screen is blank. It's time for next class.